Okay, so as I said that in today's edition, we will be covering the launch of our new product, HDFC Nifty 100 Low Volatility 30 Index Fund. Um, so this NFO will open on Friday, 21st June, and it closes on 5th July. Over the course of the next 45 minutes, we will cover the key aspects of this product. So what exactly is this product about? Uh, can you go to the next slide, Shrikant? Yeah. So India is a compelling investment for decades to come. This is on account of the it's one of the fastest growing large economies in the world. There is a capex recovery which is being led by the government, and private sector capex is also picking up. Infrastructure needs are being met. It is very rich in natural resources. There is a shift underway where global manufacturing may come to India, is coming to us, where people want to look at an alternative to China, Vietnam, and other countries which are known as manufacturing powerhouses. There are favorable demographics where the average age of the population is in our favor. The total population, which is of working age, is very large. They are skilled people. They speak English, and so that is a big advantage over other large economies of our size. The income levels also overall have been rising, and there is a low penetration of consumer goods. So there will be good consumption demand over the next 5 to 10 years in this scenario. Now let's look at over the last 25 years, if you look at this chart of the returns which are there, so one can see that uh, the Nifty returns is what we have taken. The Nifty 50 total return index is what we have considered in this chart. So if you look at it, there have been few instances of negative returns where, especially let's say from 99 to 2009, in that 10-year period, there have been four periods of negative returns. But from 2009 to 2024, over a 15-year period, there have only been four periods of negative returns. One was during the global financial crisis, one was during the taper tantrum, then the one just before demonetization, and then, of course, the COVID pandemic, which happened, which led to a 26% fall in the Nifty. So, as you can say, that volatility is always there in the markets, but over time, markets have been able to deliver positive returns to the investors. So the equity returns are never linear in one way. There are both ups and downs, and volatility is part of the what you call equity ecosystem, investment ecosystem. But over the long term, equity markets have rewarded investors. Okay, so what is this volatility? Volatility measures the extent of swings in stock prices. So stocks which tend to experience small price swings consistently are termed low volatility. So if you look at the left-hand side chart, you can see what a high volatility, share price chart would look like. And if you look at the right side chart, you look at the low volatility stock price chart, and it looks very different. So the start of the journey is the same. The destination may be similar, but there's a lot of volatility involved in that interim period. Not all investors are comfortable with this level of volatility. So here, if you look at low volatility on the right-hand side, the volatility swings are much lower, but the returns in have been positive with less downs. So that's what it is basically showing. Yes. Okay, so how does this volatility influence investor behavior? So recently, the Nobel laureate Daniel Kahneman had just expired. So he was the one who had popularized a lot of concepts in economics, which are used for the purpose of investing also. So there is a concept of loss aversion. That is, there is a cognitive bias, or there is a pain psychologically of losing.
which is twice as powerful as the pleasure of gaining. So it basically refers to an individual's tendency to prefer, just avoiding or not having losses versus earning equivalent gains. So simply put, suppose someone puts 100 rupees, the pain of losing 100 rupees is much more than gaining a further 100 rupees. So this is typical human behavior, which Daniel Kahneman was able to, enunciate through this concept of this loss aversion. So loss aversion leads investors to seek less risky investments, and for such kind of investors, they can consider investment in this particular product, which is the Nifty 100 Low Volatility 30 Index. If you look at the historical returns of this index during what you call periods of market stress, they have done much better than the underlying universe, which is the Nifty 100 in this case. And if you look at the positive side also, this index has been able to generate higher long-term returns than the Nifty 100 TRI in the past. So this index consists of 30 least volatile stocks from this large cap universes of Nifty 100 stocks. So is there a solution to deal with volatility? So it's not possible to completely, remove volatility from investing, but there is a solution which can help you navigate this volatility as an investor. So that is the HDFC Nifty 100 Low Volatility 30 Index Fund. It tracks these, what you call Nifty. It tracks this basic index, so which is the Nifty 100 Low Volatility 30 Index. So, as per the selection criteria, 30 stocks which are least volatile in nature from amongst these Nifty 100 stocks, they are selected. And so their historic pattern is that they fall less on the downside. Whenever there is a downturn or a sharp correction in the market, the 30 stocks, they fall lower than the Nifty 100 universe. And when the market is on an upswing, they have always been in line with the Nifty T100 TRI on an average on the upside. So we've covered this further in slide number 10, where we will show you or prove our point with the data. So the universe is for this particular strategy, which is the Nifty 100 Low Volatility 30 Index, is the Nifty 100. So these 100 stocks are considered in the universe. Another criteria is that stocks which are eligible for FNO and have a listing history of more than 1 year, they are eligible for being included in the shortlist. And then for a 1 year time horizon, the volatility which is measured by the standard deviation of the daily price returns for last 1 year, that is what is taken into account. So if you see 30 ऐसे स्टॉक है जिनका वॉलेटिलिटी सबसे कम है, ये स्टॉक्स हम लोग अपने शॉर्टलिस्ट करते हैं और ये इंडेक्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं. और अगर आप वेटेज देखिए तो जिस भी स्टॉक्स का वॉलेटिलिटी सबसे कम है, they get higher weightage, and stocks with lower turnover are capped than stocks with lower turnover, and they are capped at a maximum limit of 3%. और ये जो इंडेक्स है, इसकी रीबैलेंसिंग 4 टाइम होती है हर क्वार्टर: मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर. और if we look at this particular what you call chart, ये दिखाती है कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इस स्ट्रेटजी का क्या हुआ है ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस. तो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 टीआरआई ने निफ्टी 100 और निफ्टी 50 टीआरआई से बेहतर परफॉर्मेंस की है जब जब मार्केट नीचे आया है. तो हम लोग ने ये 5 टाइम पीरियड हम लोग ने यूज़ किए हैं इन एग्जाम्पल. एक तो था जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब था, ये 2008 में हुआ था, जब लीमन ब्रदर्स करके एक फर्म थी जो बैंकरप्ट हो गई, विच ट्रिगर्ड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. तो अगर आप यहाँ देखोगे चार्ट में, तो निफ्टी लगभग 56 या 56% नीचे आया है, निफ्टी 100 58% नीचे आया है, और निफ्टी लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स जो है वो सिर्फ 45.5% नीचे आया है.
और अगर आप 2013 में देखेंगे जब करेंसी क्राइसिस हुआ था, टेपर टैंट्रम, तो वहाँ पे इतना डिफरेंस नहीं था, बट फिर भी अपना जो पेरेंट यूनिवर्स है वो 4% नीचे गया था और ये इंडेक्स 3.5% नीचे गई थी। और उसके बाद 2015-16 में जब कमोडिटी बेयर मार्केट और चाइना डीवैल्यूएशन हुआ था, तो निफ्टी 10% गिरा था, निफ्टी 100 9.5% गिरा था, और ये इंडेक्स सिर्फ 1% गिरा था। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे, दो ऐसे टाइम पीरियड्स थे। एक कोविड पैंडेमिक, जब निफ्टी 50 32 नियरली 33% गिर गया था, निफ्टी 100 32% गिर गया था। तो ये जो निफ्टी लो वॉल 30 इंडेक्स है, ये केवल 25% गिरी थी। फिर 2021 और 22 में जब यूक्रेन वॉर और फेड टाइटनिंग चालू हुआ, तब निफ्टी ऑलमोस्ट 14% गिरा था, निफ्टी 100 भी 14% गिरा था, लेकिन ये जो लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स है, ये केवल 12% गिरा था। तो इससे आपको पता चलता है कि ये इंडेक्स जब जब मार्केट में शार्प करेक्शंस आते हैं, ड्यू टू जो भी रीज़न हो, जियो पॉलिटिकल इश्यूज हो या इकोनॉमिक इश्यूज हो, तो ये कम निफ्टी 100 और निफ्टी 50 के तुलना में। और ये चार्ट वही दिखाती है कि जो ड्रॉडाउन्स है पीक टू ट्रफ, यहाँ पे जो ड्रॉडाउन्स इस इंडेक्स के होते हैं वो सिमिलर या उससे कम होते हैं निफ्टी 100 या निफ्टी 50 में, विच ये हम लोग ने प्रीवियस स्लाइड में वो इवेंट्स कवर किए थे। तो यहाँ पे अगर आप चार्ट भी देखोगे, तो निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये कम गिरती है जब जब पीक से भी फॉल होता है, तो निफ्टी 100 और निफ्टी 50 से कम गिरती है। Okay, now I would like to hand over the presentation to my colleague Shikhar, and he will take you forward with the finer points and more details about the index. Yes, thank you, Sandeep. So just to carry on with what Sandeep was discussing, that this index has shown less downside than the Nifty 100. I think this is a very important slide, slide 10. Sandeep had also referred to this previously. तो ये स्लाइड क्या दिखा रहा है कि जब निफ्टी 100 में डाउन ईयर था, मतलब कि निफ्टी 100 ने उस साल नेगेटिव रिटर्न दिया है, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द लो वॉल इंडेक्स। सो इस स्लाइड से पता चल रहा है कि ऑन देयर हैव बीन अ टोटल ऑफ 5 years, 5 financial years फ्रॉम 2006 इन विच निफ्टी 100 ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। ऑन एवरेज इन उन सालों में निफ्टी ने -15.6% नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट अगर हम लो वॉल देखेंगे, देन लो वॉल हैज ऑन एवरेज ओनली फॉलन -6.3%। तो ऑलमोस्ट 10 percentage points से ऑन एवरेज लो वॉल हैज बीन एबल टू फॉल लेस than Nifty 100 when there has been a stressed market scenario. ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट इज कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट कि हिस्टोरिकली सिर्फ डाउन साइड पे आपको प्रोटेक्शन मिला है। वॉट इज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि इवन ऑन द अपसाइड, सो मतलब कि जब निफ्टी 100 या आप ब्रॉड मार्केट बढ़ा है, उस इन्वायरमेंट में भी निफ्टी 100 लो वॉल का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। सो वी कैन सी हियर दैट इन एन अप मार्केट, सो मतलब जिन ईयर्स में निफ्टी 100 का पॉजिटिव रिटर्न रहा है, ऑन एवरेज that was a 31% return. Similarly, low vol index का 31.5% return रहा है। So key message of this slide is कि not only has low vol fallen less during bad market conditions, but even in good market conditions, low vol has very much kept up uh, in line with the Nifty 100. So this is a sort of very interesting observation or interesting data point that we've sort of collected. So it's basically showing that there is both good upside and downside performance from this index. Okay.
So now we have an idea of what are the features, मतलब कि ये index कब चला है, how it's given the downside protection, how it's done well even in up markets. So now we can get little bit more familiar with actually इस index में कौन कौन से stocks हैं. तो जैसे पहले समझाया गया था निफ्टी 100 में से द 30 stocks with least volatility are chosen. It's important to note that Nifty 100 is a large cap index, which means कि इस low vol index में भी सिर्फ large caps आएंगे. So from an investor perspective, if we look at general valuations of the market, large cap valuations are much closer to average or they are at a lesser premium than mid and small. तो अभी जिन लोगों को invest करना है, there's little bit more sort of a valuation comfort in large caps, and this index, which is Nifty 100 low vol 30, will give you exposure to 30 large cap stocks, no mid, no small. Okay. If we see, what are the names currently in the low vol index. So, names again, because they are large cap, we are familiar with. So there's, HUL, ICICI Bank, Britannia, Asian, HDFC Bank, Reliance, some pharma names, one cement name. So overall, it's a very well diversified portfolio. We'll see in the next slide as well, sector distribution में. But this is to just give you a feel कि एक्चुअली क्या क्या मतलब कौन कौन से कंपनी इस इंडेक्स में अभी प्रेजेंट हैं एंड उनके वेट्स क्या हैं. ये स्लाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज इन द इंडेक्स. सो दिस इज शोइंग यू द सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी 100 लो वॉल 30 वर्सेस निफ्टी 100. तो एक चीज जो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन दिस इंडेक्स विच इज द लो वॉल इंडेक्स, it is very overweight FMCG, healthcare, consumer durables. You can see almost 25% weight FMCG में है, about 12-13% healthcare में है, and about 10% is consumer durables. So by and large, if we see, right, FMCG and healthcare are perceived to be defensive sectors. तो दिस एक्सप्लेन्स कि जब मार्केट में स्ट्रेस आता है, जो नॉर्मली थोड़े हाई बीटा हाई वॉलेटाइल सेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा गिरते हैं. बट यहाँ पे एफएमसीजी एंड हेल्थ केयर, बिकॉज इनका वेट इतना ज्यादा है, दे जनरली टेंड टू हेल्प दिस इंडेक्स सॉर्ट ऑफ डू वेल जब मार्केट में स्ट्रेस आता है. And it's also interesting to note कि underweights में this index is currently underweight financial services. So low vol index में around 15% is in financial services, but Nifty 100 में it's around 32%. So this index is quite underweight financial services and oil and gas, but on the flip side, it's more overweight the defensive sectors like FMCG and healthcare. And that's why one other way to think about this product is कि अगर if you have a portfolio which has generally sort of had exposure to a lot of themes which have done well in the current market, then this is an interesting, it's almost like a contrarian play or a defensive play, because these sectors have done about in line with the average. FMCG healthcare, they have not really done outperformed per se in the last 1 or 3 years. But if again there was some reason that market stress was to re-emerge, then this kind of product is a interesting contrarian and defensive play given the current market environment. तो अब हम now that आपको इंडेक्स के साथ थोड़ी familiarity हो गई है कि what are the names, what are the sectors, so on and so forth. Now we can see कि historically कैसे returns रहे हैं. So again, very very important point to make is that just because yes index low volatility stocks चुनती है, does not mean that the returns have also been low. तो हम देख सकते हैं कि over the last 1 year, 3, 5, 7 up till inception, the low vol index has beaten Nifty 100. So for example, over the last 5 years, this index has given 16.8% CAGR return compared to 15.7% for Nifty 100, right? So
again, point is ki low volatility, we have seen one benefit is ki it has it has fallen less during stress market conditions. But this slide is again reinforcing the point कि जब भी market में upside भी है, low vol is also has historically been able to capture this. So it is a product where you are getting, over the long term has outperformed Nifty 100, but has done so with lower drawdowns, better performance during difficult market conditions. If we see here, this is the same thing, performance by financial year. So by and large, we've already, covered the same points in slide 10. But once I'll just repeat, because here this is actually showing the underlying data. यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 100 के 5 years, there have been 5 years जिसमें निफ्टी 100 ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, right? That was 2009, 12, 16, 20, 23. बट इन ऑल ऑफ दोज 5 years, राइट, जब भी निफ्टी 100 का नेगेटिव रिटर्न रहा है, निफ्टी द लो वॉल इंडेक्स ने निफ्टी 100 को आउट परफॉर्म किया है. तो फॉर एग्जाम्पल FY09 जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, निफ्टी वॉज डाउन -36.6, बट इन दैट फाइनेंशियल ईयर लो वॉल वॉज ओनली डाउन -22.4. अभी भी इफ वी लुक ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, so -25 Nifty 100, -18 for low vol. So वही है कि this slide is showing you कि in the past when there's been a negative return for Nifty 100, when there's been a down year, low vol ने historically outperform किया है. So that is a key feature of this index from a historical perspective. And lastly, हमने already CAGR returns देखे हैं where there is outperformance. This slide is showing you the rolling returns. तो ये basically थोड़ा दिखाता है कि how consistently has the low vol index been doing better than 100 on Nifty. And यहाँ पे again, it's clear कि on average rolling return wise, low vol index has done better than Nifty 100. So for example, again, on average for all the 3-year rolling return periods we have data for, low vol index ने 15.7% CAGR दिया है compared to 12.6 for Nifty 100. And not only has the rolling return or the returns been higher on average, it has come with lower volatility also. So यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि the for same 3-year period, standard deviation was 6.1% for low vol versus 6.9% for Nifty 100. This is standard deviation of rolling return. तो इसका implication क्या है कि you have had a index which on average on a rolling return basis उसका it has outperformed Nifty 100 and it has done so with less risk as well. So that is a very great combination for investors, and that's why हम देख सकते हैं कि this return risk column also is green because it's showing very much in favor of the low vol index. So just to summarize, we have gone through low vol index के अभी सबसे बड़े constituents क्या है, what is the sector distribution, to get as a potential investor you are also familiar with actually what the fund will be buying, what the fund will be investing in. And last 3 slides we looked at returns from different perspectives, and the conclusion is that just because these are sort of low volatility stocks, they appear to be not moving much, that does not mean they give low returns. What realistically happens is that they tend to fall less during difficult market conditions, and then they track the market well on the upside. तो रिजल्ट क्या है कि आपको ओवरऑल रोलिंग या point to point returns you are getting the outperformance versus the benchmark, but आपका मार्केट स्ट्रेस एनवायरनमेंट में ड्रॉडाउन्स या गिरावट वो कम रहा है. So with that I will conclude and give it back to Sandeep. Thanks, Shikhar. So why should one invest in the low volatility index fund? The points that we had highlighted in our past slides in the presentation, outperformance during market stress. जब market गिरा है, Nifty 100 low volatility 30 index ने बेहतर परफॉर्मेंस की है क्योंकि तुलना निफ्टी 100 के तुलना में वो कम गिरा है. Lower cost
इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि ये इंडेक्स फंड है तो इट इज़ अ लो कॉस्ट रन प्रोडक्ट एंड इट इज़ आइडियल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तीसरा पॉइंट, लो वॉलेटिलिटी का मतलब कम रिटर्न्स नहीं होते हैं। अगर आप देखें तो ये इंडेक्स ने प्रूव किया है और इनका एंडेवर है कि ये अपना निफ्टी 100 जो उनका यूनिवर्स इंडेक्स है उससे बेहतर परफॉर्मेंस करे, और ये डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुका है। चौथी बात है कि द यूनिवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज द लार्ज कैप यूनिवर्स। तो जो 100 स्टॉक्स देश के हैं जिन्हें लार्ज कैप स्टॉक्स बोलते हैं, दे आर द यूनिवर्स फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो उस वजह से ये बेहतर है, क्योंकि करंट जो पोजीशन मार्केट का है, तो अगर आप लार्ज कैप्स की तुलना मिड कैप या स्मॉल कैप से करेंगे तो इनका प्रीमियम जो है हिस्टोरिक एवरेज से, वो मिड कैप और स्मॉल कैप के प्रीमियम से कम है। तो आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी या एक कुशन भी मिल जाती है जब आप लार्ज कैप यूनिवर्स से स्टॉक्स आप चुन रहे हो। हमारे जो की स्ट्रेंथ्स है पैसिव प्रोडक्ट्स में, हमारा जो एक्सपीरियंस है पैसिव प्रोडक्ट्स या इंडेक्स फंड्स रन करने में, वो 20 इयर्स प्लस है। हमारा जो बोके ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी काफ़ी वाइड है। हमारे पास 19 ETFs है, 19 इंडेक्स फंड्स है, और 3 फंड ऑफ फंड्स है। 7 हमारे मार्केट कैप बेस ETF और इंडेक्स फंड है। 4 सेक्टर बेस ETF है और एक सेक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड है। 5 स्मार्ट बीटा ETFs है और 3 इंडेक्स फंड है स्मार्ट बीटा। 2 कमोडिटी ETFs है और 2 फंड ऑफ फंड है जो इन ETFs में डालते हैं गोल्ड और सिल्वर। हमारे पास 8 डेट इंडेक्स फंड्स है और एक लिक्विड ETF है और एक इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड है। हमारा लीडरशिप बहुत सारे कैटेगरीज में है। एक मार्केट कैप बेस्ड प्रोडक्ट्स में जो निफ्टी और सेंसेक्स है हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम्स इन द इंडस्ट्री है। हमारा जो गोल्ड ETF है इसका 12 साल से ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट अ 5,000 crore AUM प्रोडक्ट। स्मॉल कैप ETF वी वर द फर्स्ट टू लॉन्च इन द इंडस्ट्री, एंड इसका भी मार्केट लीडरशिप है इन टर्म्स ऑफ AUM। So to summarize, basically the Nifty 100 Low Volatility 30 Index Fund aims to track this particular index, which is provided by NSE. This is a smart beta product, which is a rule-based product or a factor-based product. The rule of factor here is volatility. The lower the volatility, then that stock is basically shortlisted for inclusion in this index. Fund managers for this fund are Nirman Morakhia and Mr. Arun Agarwal. और इसमें बेंचमार्क वही है जो Nifty 100 लो वॉलेटिलिटी 30 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इसमें एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है, और द मिनिमम अमाउंट ड्यूरिंग NFO और बियॉन्ड इज ₹100 एंड एनी अमाउंट देयर आफ्टर। ये एसेट एलोकेशन टेबल है जहाँ 95% इज द मिनिमम एलोकेशन, 100% इज अ मैक्सिमम एलोकेशन। This is the product label. This comes under very high risk category as per SEBI definition. So smart beta investing, which I spoke about, the low volatility is part of the smart beta investing universe. They endeavor to provide better risk-adjusted returns than the plain market cap weighted indices. The commonly followed market cap weighted indices are Nifty 50, Sensex, mid cap 150, small cap 250 index. So smart beta, we have various strategies like momentum, low volatility, quality, value, and growth. So this is one of that. They are all based on a rule, so they are very transparent. Index methodology is available for everyone to see. Uh, they are backed by extensive empirical research by the researchers and index providers before they are launched. And globally, if you see the quantum of स्मार्ट बीटा प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजिंग। 610 बिलियन से अभी 1.56 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं 6 साल में।
तो इसका CAGR is 16.6%. Thank you very much. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।